And the big news is the trailer is already trending on #1, ladies and gentlemen. Double trailer, boss. And we have to do Sony. So DJ, are we ready with the sound? Shake a leg with Rohit, of course, on Sony. लेकिन उससे पहले we'll have a quick photo op with the team, ladies and gentlemen. चल निकलते हैं। कैसे जाएगा? थोड़ा लंबा चलने के लिए तैयार है तो यहाँ से भी जा सकते हैं। आगे से ऐसा नहीं चल रहा है। चल कुछ करते हैं। Come. साथ में अरे धन्ना पकड़ ले साइड पे हो गया बाय बाय सोलो पूजा और कौन आ रहा है? बहुत टाइम के बाद एक रोम-कॉम आ रही है और आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर दिस फिल्म। मेरा सवाल आप चारों से है कि फ्रेंडशिप के ब्रेकअप ज्यादा हर्ट करते हैं या रिलेशनशिप के? ये बहुत भारी क्वेश्चन है। माय बेस्ट फ्रेंड इज राइट हियर। दिस इज अ वेरी हर्टफुल क्वेश्चन। बट फिर भी कुछ No, I definitely think friendships के breakups ज़्यादा hurt करते हैं क्योंकि जब when you go into a friendship, you think this is going to be there with you for your life. A breakup, a relationship, you always have in the back of your mind that maybe this won't work out. But your friend, when they're not there with you, you always think about that. And that will stay, it kind of stays with you for your life if it's a very close friend, I feel. So they're definitely worse. Yeah, most definitely. I would say the same. I can't imagine my life without my two best friends, Rohan and Aisha, and it would break my heart if it has to come to that. I don't think I'll be able to handle it. Likewise, I feel like friends are your foundation, and you bounce off all your ideas from them. And I feel like if you would lose a friend in a friendship breakup, I think that would hurt a little bit more than a romantically inclined relationship that you're having. But that being said, दोनों में बहुत तगड़ा दुख होने वाला है अगर either of the two were to happen. Yes. मेरे दो दोस्त बचपन के दोस्त यहीं बैठे हैं, मेरे बेस्ट फ्रेंड्स नर्सरी से, सूरज एंड जानवी, एंड वो हर मोड में मेरे साथ रहे लाइफ में। तो अगर मैं उन्हें खो दूंगा तो मैं शायद फंक्शन नहीं कर पाऊंगा। सो आई थिंक फ्रेंडशिप ओवर रोमांस एनी डे। यस, चेक भिजवा देना। हाय नाइला, नीतू सिंह फ्रॉम दैनिक भास्कर। ट्रेलर बहुत अच्छा है और बहुत खूबसूरत है, नया नया प्यार। सो एक सवाल में I must say very cute trailer. The trailer is very cute. Looking forward to the film. But my question is firstly, so I have a question for Rohit, Gibran as well as Ramesh sir. Sir, to start with you,
So जब 2003 में इश्क विश्क आया था, it changed the game in a way, you know, it brought instant stardom for Shahid Kapoor. And now, with Ishq Vishk rebound coming, to what extent do you think is this film going to be a game changer for these four budding amazing stars? उस वक्त भी जब इश्क विश्क आई थी तो एक नई पिक्चर थी, एक ऐसी कॉलेज फिल्म थी जो इसके पहले कभी आई नहीं थी। तो अभी मैं जो देख रहा हूँ, अभी जो इस माहौल में जो चल रहा है, अभी इतनी पिक्चरें जो आ रही है, एक्शन ये वो, तो उसमें मुझे ये लगता है डेफिनेटली ये पिक्चर डिफरेंट है, यंग है और आज की जनरेशन की कहानी है, आज की जो जनरेशन है उसकी कहानी है और उन्होंने सबने बहुत अच्छा काम किया है और मैं आई एम वेरी होपफुल एंड पॉजिटिव दैट दीज फोर विल बी आल्सो बिग स्टार्स। हेलो, hi. So Jimran, the next question is for you. So you know, like Sir Ramesh mentioned that you never revealed that you were the Khetri ji ka bacha during the auditions. Yes. But you know, playing Shah Rukh Khan and Kajol's on-screen son, has that ever, you know, has that weightage ever been there now that you know you are foraying into films? No, not at all, not at all. I think in fact it's a privilege, it's an honor to play their child at such a young age. And I feel that the amount of love which has transcended over the years, it's unconditional. Like even today, people give me that same love, and I just hope it continues with Ishq Vishk and inshallah whatever happens in life. So there's no pressure, but there's just too much love, and yeah, there's too much love. Thank you. Lastly, Rohit, how do you plan to tackle with all the comparisons to Shahid Kapoor? Sir, I honestly, it's happened already. It started off with the title track when it released. Everyone compared. I think it's firstly a huge honor to even be compared to somebody as legendary as Shahid Kapoor. I have absolutely been a huge fan of him over the years, especially starting with Ishq Vishk, considering that was his first film. I remember watching him dance to the title track, which was actually a part of a massive medley. It was a small part of that. And I remember watching that and being in awe of how amazing a dancer he was. And of course, over the years, he's proven himself to be a phenomenal actor. So, the moment I'm being compared to Shahid sir, I think it's a huge honor in the first place. But at the same time, it's an honor. I feel like I don't want. Gypsy always. और आपका बहुत बड़ा ब्रेकअप हुआ है and you want to vent out. Naila. Oh, so cute. Thank you so much. कहाँ से आ रहा है पहला सवाल? Just let me know. जी, okay, राहुल. All right, here we go. जी. Rohit, your center. Yes. Left. राहुल here from the फिल्मी चर्चा. मेरा सवाल चारों स्टार कास्ट से है. ट्रेलर में एक लाइन था आपका कि इश्क विश्क में बैंड बज गई यार. तो रियल लाइफ में कभी ऐसा सिचुएशन आप चारों के लिए बोलते हैं? ट्रेलर में वो लाइन था कि रियल लाइफ में सिचुएशन कभी ऐसी आई है आप चारों से? ट्रेलर में लाइन ये है कि इस दोस्ती के चक्कर में इश्क विश्क के चक्कर में दोस्ती की बैंड बज गई. क्या वो सिचुएशन मेरी लाइफ में आई है? बिल्कुल भी नहीं सर. मैं ऐसी जगहों पे जाता ही नहीं हूँ जहाँ पे मेरी बैंड बज जाए. ग्रीन फ्लैग. नहीं. नो. सो मतलब प्यार में तो बैंड बजती है, वो बजी है, बट ऐसे दोस्ती की बैंड नहीं बजी है थैंकफुली. आप चारों से सवाल, सिचुएशन कैसे हैंडल करते हो? इस इश्क विश्क के चक्कर में हमारी तो लाइफ बन गई है. हम चारों की. नहीं सर, मैं भी बहुत दूर रहता हूँ. सिंपल इश्क विश्क. झूठ बोल रहा है मेरे दोस्त यहाँ बैठे हैं. नहीं. Same for me. I feel friendship एक तरफ and इश्क विश्क एक तरफ. दोनों को अगर मिलाऊंगी तो बैंड किसी भी एंगल से किसी भी चीज को बचना नहीं चाहिए. सिर्फ किसी भी चीज जिब्रान यार is mine ना. पर हाँ, दोनों चीजों को सेपरेट ही रखना चाहिए और अगर मिल भी जाए तो मिलजुल कर रहना चाहिए. किसी भी चीज का बैंड नहीं बचना चाहिए. रमेश सर, योर लेफ्ट. ये 4 कोहिनूर हीरा कहाँ से निकाल के लाए?
थैंक यू सर, आपके लिए फ्री टिकट। थैंक यू। रोहित को तो हम जानते थे, मतलब उसका काम देखा हुआ है, और वैसा लगा कि राघव के रोल में ही इज द करेक्ट चॉइस। एंड पश्मीना एंड जिब्रान ने बहुत मतलब हमारी काफ़ी शॉर्ट लिस्ट में से इन्होंने बहुत अच्छा ऑडिशन दिया। एंड जब हमने पश्मीना को लिया भी था तो वी डिडंट नो दैट शी इज़ अ रोशन। उसने सिर्फ अपना नाम पश्मीना बताया था, तो हम लोग ने इवन निपुण ने उसको बहुत लाइक किया। एंड व्हेन वी साइन द कॉन्ट्रैक्ट दैट टाइम वी केम टू नो दैट ये राजेश रोशन जी की बेटी है। एंड जिब्रान ने मुझे बाद में पता, उसने ही बताया कि मैं केतरी जी का बच्चा मैं हूँ। तो नायला का काम हमने देखा है, तो तो इस हिसाब से कास्टिंग हुई। थैंक यू। Hello everyone, Pooja Nawathe here from Hotfly. Hi buddy, how's it going? Hi. The trailer looks outstanding and you all are looking so stunning. Thank you so much. Okay, Pashmina, आपकी 3 सिचुएशन है. Okay, तो आपको चूज करना है between रोहित, नायला, जिब्रान. इस सिचुएशन में आप किसको चूज करेंगे? ठीक है? क्या सिचुएशन क्या है? ठीक है। अच्छा आप बताएंगे। हाँ ठीक है। आशिक किया। आशिक कितनी पर्ची डाली? You didn't take it off. Dude, sorry. No, I did. There's 2. Okay, then I'll take one. Yeah. Ariyansh Singh. Manish. I left. Hi. Okay, my question to you is pretty straightforward and simple. What are the qualities that you look for in your girlfriend or your future girlfriend or your future partner? Your future wife. She should be just... First of all, I'm just speechless when I'm talking to Naila ma'am. So I'm happy that I'm talking to you. thank you. Ariyansh Singh. That's a lovely name. Thank you ma'am. Yeah, so basically she should be understanding. Like example, if there is a fight, so we should know how to communicate. Then second, even if there is a fight, we should know how to make up. Like Make out. Us bro, us. I said make up. Both are true. Make out and make up. In all honesty. I don't have anything else to say because I'm speechless, like I said. Sorry, Mummy. Okay, good points, guys. Do you think he has anything else to add? Ladies, do you think there's anything else that he needs to add in his list? Did he say make out? I I said think make we up. should add that. You have anything to add? Anything to say? Yeah, Say. add to Ariyansh Singh's Add to list. heart. They are not like the Ishquish boys ना, तो वो तो necessary होना ही चाहिए. तुम तो बड़ी But Mr. Singh is happening, huh? Happening? Yeah, look. Make out या make up? वो अगर आप लोग दोनों में से है तो make out. अगली इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं होते। Don't worry, Mr. Singh, I'm coming to you after this. Thank you so much, ladies and gentlemen. एक बार जोरदार तालियां for these rock stars here. Thank you so much. और जिन लोग आप मैम उधर संपर्क करो, वो था ना कम्युनिकेशन वाला, थप्पड़ वाला, बड़े मस्त मैच होगा। आप लोग वापस से आ जाइए। थैंक यू बड़ी, इतना बुरा लग गया। ओके, वुड आल्सो लाइक टू, हम लोग यहाँ पे अपने फेवरेट स्टार्स से सवाल पूछते थे, राइट? वील गेट अ मौका टू डू दैट। हमारे जो मीडिया के रॉक स्टार्स यहाँ पे आए हुए हैं, लेकिन फिलहाल के लिए कुछ फैंस से ये जो कास्ट है वो कुछ सवाल पूछने वाली है, और यहाँ आप सबके नाम हैं इन चिट्स में। सो देखते हैं किसका नंबर आता है और किससे रोहित, पश्मीना, जिब्रान और नायला अपने दिल का सवाल पूछते हैं। सो जिनका भी नाम निकलेगा, I'll invite the person on stage. Would request you to come up on stage. सबने दिया ना अपना नाम? Thank God, नहीं, तुम्ही से डर लग रहा था। कितना था इसलिए ये लगा है ना, अलग से गाली देने लगे। मैं खुद Okay, so Rohit, please do the honors. What I'm supposed to record? Yes, just any name, yeah. अरे वो टूट गया, सबका पसंद है, काफी अच्छा तू गुप्ता आवाज भी आता था। Paul Jain. अरे ये हरी मजे लग गया। जैन साहब कहाँ हो आप?
अरे आएगी. Hi Pearl, how are you? Hi girl. Very good. Thank you for being here. I have a question for you. हाँ. I have a question for you. Okay. What is? He's processing it. What does love mean to you? Switch it on. If right now is the time you want to take my name, you can just. Firstly, I love all of you. And honestly, I've never experienced love. Okay. But I think love is basically you need to be comfortable with the person, be completely yourself with That's the what I other said, no? person. That's what I said. I like how we think. The other person should actually be like the other half of yourself. Is there more to it? You want to add some? You and I will chat after. Ooh. Thank you so much. Thank you. Thank you. Pashmina, yeah, your turn. Rohit, I have a letter for you. सब ले लूंगा बाद में. जी पश्मीना, your turn. Pick Mr. Ayush Lodha. Where is he? आयुष, लीजिए माइक. Hello, Ayush. Okay, my question for you is. Hello. My question for you is, what's the cutest thing you've done for your girlfriend? Or ex-girlfriend? Okay, this is about like 2 years back. I was out of town, like I went for a trip, but then I had my 1-year anniversary with my girlfriend, and I had to do. Look at you being cute. Okay, so I'll continue. One second, what anniversary? First year. 1 year for 1 year. I was out of town. So she had her favorite movie, To All the Boys I've Loved Before, and there's this agreement in that movie. So I made that agreement. I was busy at that time, and I made that agreement. I bought flowers online and I sent it to her. I mean, that's what I remember. That is romantic. Cute. That's adorable. Can we have like a huge cheer for Ayush? Ma'am, I just can't get my eyes off you. You're looking very pretty today. What about your girlfriend now? I knew it. Nice, play safe, bro. We were so shocked to know that you are single now. I'm single right now. I will keep it in mind. Thank you, Ayush. Take care. Okay. Jimran, your turn. Okay. बोरिंग क्यों करने का ट्वीट करने कुछ गिफ्ट भी Saisha Mathur. Where's Saisha? There's no Saisha. Where? I can't see. Oh God. Can you come lower? पूरी मोमेंट हो गई. Hello. Hi. Hi. How are you? I'm all good. I just wanted to tell you that I find you really cute. But I can't see you to say that. I'm so sorry. Okay, now I can. And you're very, very, very pretty. Thank you. Okay, so my question is simple. I'm a little old school lover, so I want to know who was your first love and what was it like? बचपन का प्यार. तू नाम पूछ रहा है भाई? Like experience क्या था? So I had a crush on my best friend. Oh, that is something I Sounds can relate to. familiar. Sounds familiar. Where have we seen मेरा भी नो. Yeah, so it was around in 4th grade when we used to sit together, and so he used to get me chocolates and stuff every day, and that's how I like, started loving him. Oh, that's cute. And did it go ahead? No, when he asked me out, I Freaked out. out. I said no. Okay, fine. That's cute. Thank you.
Thank you. I just have one request. Can I please get your autograph? Please? Of course. Thank you. Thank you. Yeah. Okay. Naida, your turn. Left, right. Jasvardhan. Where's Jasvardhan? Oh, there he is. For a rebound, but I realized I was looking for my ex in her. So eventually we broke up. That's very honest. Very honest. And after we broke up, I got back with my ex. You had 2 rebounds. That's interesting. We broke up too. Are you basically now going to say you're single and that you want to take her out? I don't mind. As long as she's not your rebound. Okay. Thank you, Jess. Thanks, Jess. काफी enlightening था वो. We'll take one more question. Yeah, Rohit, आपकी बारी. Ashi, ghee up. Oh, hi Ashi. आशी को माइक दीजिए. Such a lovely smile. Thank you. Okay, my question to you is, do you have a boyfriend? That's not my question, I'm just asking for context. But if you want. Yeah, I'm taking offers. You know, I like how she's standing there, she's saying, I don't have a boyfriend besides you. Love it, superb. No, so अच्छा, हमारी बात तो हम बाद में करेंगे. What I'm saying is, have you ever had a boyfriend? Yeah. So tell me, when you guys fight, what would you do to make up for it? Or what would you like your boyfriend to do to make up for it? I'll just say we communicate about our issues and then I'll slap him. Lovely! Best! You allowed it? Cute. And then he laughs and the fight is over. So she has an image that I'm gonna have a fight with my boyfriend, then we will make up, we will communicate, then I will slap him, and then he will laugh. All of this is in her head. I love it. Thank you for basically giving me the template. If I were to ever be your boyfriend, this is what I have to do. I won't slap you. You don't need to be scared. I just keep looking at you. You don't need to be scared. Thank you so much. Really beautiful. I'm a huge fan of yours and if you don't mind, can I get an autograph? We'll do the pictures and all that later, okay? ज़्यादा मौका दे बास्केट में रख के घर ले जाएगी. Okay, Pashmina, your turn. Sorry. आदिवासी अरे तो गाने का नाम मोरनी है. Hem Shah. अभी भी स्टोरी पे होगा. Hi. There is him. Oh, hi him. So sweet you look. Thank you. Hello. So my question for you is: have you ever given a very cheesy pickup line on a girl, and what was it? Let's try right now, I guess. I love this audience so much. Okay, come on. Okay, so we saw in the trailer that there's this line that do you believe in pyar? Do you believe in love? Do you believe in pyar? So what I mostly believe in is destiny. And I think we're destined to meet right now. That was amazing. 10 on 10 for that. He wants to meet. Of course we will. अभी मिलेंगे करेंगे सब करेंगे मिलेंगे ना मतलब मुलाकात करेंगे we'll meet up. Jibran, your turn. Thank you so much. Thank you, Rockstar. लाइन में मुझको लाइन से मत करने लगे एकदम लास्ट वाला ओ यस कह दो ना you are Sonia. Where is Sonia? अरे उसको गाना दे उसके फिल्म का Absent? उसके फिल्म का गाना पायल Sonia sir, Payal. पायल अच्छा इधर सामिया
Samya no, yaar, everyone is there. I can't see. Okay, hi Samya. Yes, I can see something, but I can. अरे वाह Okay. और ये लोग पैर भी मारे जी बहुत पीछे है आगे बुला रहे हो लोग मार्केट हेलो जी जिब्रान कम Samya. Hi. Hello. Hi. Okay. Simple question. You watched our trailer? Yes. So there's a dialogue where I say, इस लड़की के चक्कर में तूने दोस्ती की बैंड बजा दी. हाँ जी. So in that context with you, Yeah. remove the लड़की, put the लड़का. Yeah. Has that ever happened with you? I've never been in love, so I've never done that shit. I've never done that No, shit. that's Shazi. Okay. No, I haven't. Just talk, say something. Question over. Nothing, I'm just nervous, just secure. Okay, thank you so much. Yeah. थैंक यू ओके मैम आपका टर्न नाइला जी। देखते हैं क्या होता है बोलो ना एक बार, नाइला जी. Ashi. Give it up for Naila Grewal and Gibran Khan. Also, ladies and gentlemen, the director Sam Nipun Avinash Dharmadhikari, he is here with us. Give it up for him. And of course, Ramesh Taurani साहब Tips Film से, so please आइए. And ये इतने अच्छे फैंस आए. I have a big surprise for you, जो कि मुझे नहीं लगता इससे पहले किसी फैन को मिला होगा. And उसके लिए just relax, sit back, relax. किस को चाहिए एक बड़ा सरप्राइज? Okay, मीडिया से हमारे फ्रेंड्स उनको भी चाहिए. First of all, congratulations. This is phenomenal. We'll start with the director साहब. Sir, डिजिटल डोमेन हो, फिल्म्स हो या जो भी अब तक आपने काम किया, ऑफ कोर्स जब आप कुछ रिव्यू करते हैं, कुछ बोलते हैं, वो भी बड़ा कमाल का होता है. यू नो, टेकिंग दिस लेगेसी फॉरवर्ड और इस तरह से कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी और क्या-क्या इंस्ट्रक्शंस मिले थे रमेश सर की तरफ से? यार इंस्ट्रक्शंस तो एक्चुअली कुछ नहीं मिले इनसे. He gave a complete free hand. That was an amazing thing. And रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं इनके ही एक फेमस दिवाली पार्टी में गया था, पहली वाली, और वहाँ पे केन घोष मिले थे, द फर्स्ट इश्क के डायरेक्टर. और हाय हेलो होने के बाद उन्होंने ये कहा था कि अच्छा तेरा एड्रेस है मेरे पास, आधार कार्ड, पैन कार्ड सब कुछ है, अगर कुछ गड़बड़ हुई तो मैं आपके घर पे आने वाला हूँ और वहाँ पे गड़बड़ करूँगा. सो या नो प्रेशर आई गेस. आई एम श्योर सर, क्योंकि जो भी हमने बड़े पर्दे पे देखा, एज आई सेड, इट हैज एवरीथिंग. प्यार है, मोहब्बत है, दैट इंटेंसिटी, एवरीथिंग. लेडीज एंड जेंटलमैन, निपुण सर के लिए एक बार जोरदार तालियां. रमेश सर, मेरा अगला सवाल आपके लिए है. ऑफ कोर्स पहले जब इश्क विश्क आई थी तब भी उसके गाने बहुत ज्यादा फेमस हो गए थे. इस समय भी समझ नहीं आ रहा है कौन से वाले गाने को लूप पे सुने, बिकॉज एवरीथिंग इज सो फिनोमिनल, एवरीथिंग इज सो अमेजिंग. तो ये स्ट्रैटेजी थी सर, पहले से गाने देके सबको लत लगवा दें हम यहाँ पे? डेफिनेटली, क्योंकि हमारा हमेशा टिप्स में हमेशा ये ध्यान रहा है कि हमेशा हमारी पिक्चरों का म्यूजिक बहुत अच्छा हो और पिक्चर भी बहुत अच्छी हो, लेकिन म्यूजिक पे हम लोग बहुत एक्स्ट्रा ध्यान देते हैं. और इस पिक्चर में 6 के 6 गाने, आप जब अभी तो 3 आए हैं, एक और आने वाला है अभी, और 2 गाने आई थिंक रिलीज के बाद आएंगे. बट यू विल, पीपल विल लव ऑल द सॉन्ग्स, ऑल यंगस्टर्स विल लव द सॉन्ग. Already sir, hello there, you sir. We're loving the songs, each and every song. Rohit, this one's for you. I know सबको इस बात का जवाब जानना है. You know, ऑडियंस के प्रति आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ऑफ कोर्स, बट यू हैव दिस अमेजिंग फैंडम. तो ये कहीं ना कहीं थोड़ा ज्यादा प्रेशर डालता है कि यार मुझे बाकी सबको तो अच्छा फील कराना है, लेकिन अच्छा काम करना है ताकि ये एक इंसान जो यहाँ पे बैठा है उसका जो भरोसा है, जो प्यार है, और ज्यादा मिले मुझे. Thank you, Nitin, for that question. Thank you so much
for all the love. I honestly, sir, it's the other way around. It's not मुझे pressure feel नहीं होता. मुझे actually बहुत अच्छा feel होता है. I feel very secure. Taking leaps and doing work that I haven't done before, exploring genres that I haven't before, taking risks. I actually feel very secure because I know that I have a fan base that will support me no matter what. So it's actually lovely. Pashmina, this one's for you. Please tell me the last time we met. तब आपने बोला था आप नर्वस हो, लेकिन तब से लेके अब तक ईच एंड एवरी यूनिट जो भी आया है, टीजर बोलो, गाने बोलो, इतना प्यार मिल रहा है. यहाँ जो रिस्पॉन्सेस ट्रेलर को मिला है, अब इट्स ऑल सेटल, वो सेटल वाली फीलिंग आ रही है. नर्वस तो मैं अभी भी हूँ, बस थोड़ा छुपाना आ गया है. But no, today I feel extremely emotional. It's a big day for all of us, and to see the response that everyone gave, to see my mama sitting there. I swear we played the trailer the first time and I was so scared. Oh my god. I sat there, I felt the love that each and every one of you are giving us, and I have tears in my eyes. I had tears in my eyes there. I hope my makeup is fine. Thank you so much. जिसके लिए लड़कियां रो रही थी. What do you have to say? The kind of response that you got. Firstly, आपको ट्रेलर कैसा लगा, guys? आवाज नहीं आ रहा है. Okay, honestly, I'm a bit numb right now with this, everything which is happening around me. This has been a dream and I don't want to bore you all with this, but I actually am not being able to process this because it's so beautiful and I don't know, man, that just Rohit saying is Ishq Vishk ke chakkar ne band baja di, that is just playing in my heart. And yeah, there is a lot of pressure. I mean, we really want to make everyone feel the love. We want people to come back to cinema and enjoy the simple love stories because we've put in a lot of effort, a lot of hard work, and I hope that transcends and you all keep giving us the love which we all have been. And yeah, I forgot the question. Sorry. Yeah. It's okay, आपने जवाब दे दिया, हम खुश हैं. सिर्फ इतना ही वो चेहरा. Okay, thank you so much. Naila, this one's for you. Quickly, I'll ask you. ये मैंने सुना है टॉपर बिहेवियर चल रहा है आपके साथ. इंटरव्यूज में भी आप किल कर रहे हो और अभी वो अवार्ड्स के संग पिक्चर्स डाल रहे हो. What's with this टॉपर बिहेवियर of yours, man? Please tell us. No topper behavior, honestly. I'm so grateful to be getting this opportunity. Ramesh ji and Nipun sir have put in so much of faith and belief in all of us. We're all so new and so fresh, and I've come with no baggage of no award or nothing. I just want you all to enjoy the love that we've shown in this film. It's going to take you back to that quintessential love story that we all adored in the 90s and the 2000s, and it's back with a bang in 2024. So 21st June is when we'll get to see it in theaters, ladies and gentlemen. And we'll quickly go click. It's time for a quick photo op for all you amazing people, है ना? और उसके बाद जैसा मैंने कहा था, फैंस के लिए एक सरप्राइज है मेरे पास. So अभी यहाँ पे रमेश सर, निपुण सर, मैं आप लोगों से कहूँगा प्लीज अपनी सीट्स लीजिए बिकॉज आपके लिए भी कुछ बहुत एक्साइटिंग यहाँ पे होने वाला है. सारे फैंस को हम सरप्राइज दे रहे हैं यहाँ पे. जरा दिल ले आओ, कुछ पंक्तियां या पत्ते तोड़े उसमें से. Thank you so much. And I really cannot wait for all of you guys to watch the trailer. Thank you. Love you too. Thank you. टूट पड़ो सब लोग. Okay, Naila, for you, quickly. Real quick, I am firstly so thankful that all of you are here to support not only Rohit but all of us. We've obviously made this with a lot of heart, and to see so many cheers and so much of love is just
so reassuring. So thank you, and there's lots more in store, so be ready. Gibran, over to you. Firstly, thank you. I mean, the nerves. But yeah, like this is just such a beautiful dream which I'm getting to share with these wonderful people on stage. Ramesh ji, thank you, thank you, thank you, thank you. Nipun sir, Jaya, can see you. I love you. And guys, thank you. This is so overwhelming. All of you all here. This is the best crowd here. Thank you so much, man. Thank you, thank you, thank you. You know the vibe check. इसमें तो हम 100 number पा चुके हैं यहाँ पे. Quickly we'll all be seated. है ना? We'll take our seats and जिस काम के लिए आए हैं वो कर ही देते हैं. Ladies and gentlemen, the grand trailer of Ishq Vishk Rebound. Sir, please. जितना जोश आप लोग यहाँ दिखा रहे हो, प्लीज ये 21 जून को फर्स्ट डे फर्स्ट शो थिएटरों में दिखाना. थैंक यू. Thank you, Ramesh sir. Of course. Give it up for Rohit Sir, ladies and gentlemen. And with him. Okay. Ladies and gentlemen, the current heartthrob, Pushmina Roshan. अब जिन्हें बुलाने जा रहा हूं उनके लिए इतना ही कहूंगा. महिलाएं रो रही हैं जयपुर में और यही इंसान रिस्पॉन्सिबल है. जिब्रान खान, ladies and gentlemen. Here comes the rock star. And now, ladies and gentlemen, give it up for Naila Agrawal. And it is. Welcome, Naila. You know what? तुम लोग कॉन्फिडेंस देख रहे हो वहां से जब चारों चल के आए, because the love that you all have given to their songs, to the teaser is phenomenal. एक बार जोरदार तालियां. And बातचीत करने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन उससे पहले this is the first time that we'll get to meet your director साहब. So ladies and gentlemen, Nipun Avinash Dharmadhikari. And now, ladies and gentlemen, the man who's backed it all, अपनी पूरी माइंड के साथ और अपने पूरे इमोशंस के साथ इस लेगेसी को आगे ले जा रहे हैं. Give it up for Mr. Ramesh Taurani. रमेश सर, कंग्रेचुलेशंस. क्या माहौल बनवा दिया है आपने. दिस इज आउटस्टैंडिंग. निपुण सर, यूं तो अभी बातें बहुत सारी करनी है, लेकिन मैं चाहूंगा शुरुआत में, बिफोर वी सी द ट्रेलर, इफ यू हैड टू से समथिंग टू ऑल आवर फ्रेंड्स हियर जो मीडिया से आए हैं, जो इन चारों स्टार्स के फैंस हैं, उनके लिए क्या बोलना चाहेंगे सर? पहले इश्क विश्क ने हमें शाहिद कपूर जैसा स्टार दिया था. इस इश्क विश्क रिबाउंड से हमें 4 स्टार्स मिलने वाले हैं. थैंक यू सर. रमेश सर, बहुत सारे सवाल हैं, as I said, but I would want you to welcome everyone, sir. I'm very happy that such a huge crowd has come, and I think you will love the trailer. You will love the film also. Thank you. Wow. Pushmina, one word for this entire thing that is happening, और इस समय क्या चल रहा है? I can't just concise it in one word, but I'm feeling so well. Thank you so much, everybody, for being here. It's something else. If I say more, I'm going to start crying. Rohit, what do you have to say? Right before the trailer.
much for being here. I am so लेफ्ट में दो सेंटर आपके राइट में We get a lot of montage there inside. Let's go inside. We quickly go inside. Thank you so much. Solo will be inside. Solo will be inside. राइट में देखिए लवली लवली solos inside. We take a 2-minute and after that we get back to some serious work. Okay. सेंटर में देखिए सेंटर लोग सेंटर Thank you so much, ladies and gentlemen. Gibran, Pashmina and then Rohit Meghana. ये क्या किया? चलो ये पूरी टीम्स की एक पिक्चर कर लेते हैं. Good, of course, want Ramesh sir to be in the picture. Nipun sir, please आइए with this team, of course. Movie, of course. चलो all of you. अपनी अपनी टीम के साथ. इधर देखिए That's all we have to do, ladies and gentlemen. Now what we do is we straight away go inside and have more fun. Janvi, come on, what are you doing? And Rohit, Saraf and Megha leading. Naila and Shreyas, ये जोड़ी कमाल कर रही है. They're almost there. This is craziness. Naila Grewal and Shreyas, they are already killing it. 2 more to go. 2 more to go. मुझे लगता है दूसरे नंबर पे जिब्रान और जानवी है कहीं ना कहीं. चलो रख दो अभी. Okay, we give you the first chance. You be here, Pashmina, go. You're so gorgeous, pick up your parcel already. Jibran, you also can come and don't do this. Pashmina, leave it. Place it in front of you. And here we go. Nipun sir, Ramesh sir, 3 and 2. Janvi, setting ही करना काम करना है. And 1. Here we go. Ladies and gentlemen, this quiz 3 rounds. Of course, Pashmina Roshan, ladies and gentlemen. Naila Grewal, and of course, Gibran Khan. And for the first time इस crew के साथ आप सबसे मिलने के लिए, of course, Nipun Avinash Dharmadhikari, the director. The man who backed this wonderful project with all his mind. Give it up for Mr. Ramesh Taurani, ladies and gentlemen. Ramesh sir, all I want to say is कि बाकी सब तो अच्छा है, लेकिन यहाँ पे when we got a call for this grand trailer launch and fan meet, we were like हमें इतना सारा प्यार तो already मिल गया है.
because you guys are everywhere. Nipun sir, congratulations to you and the entire team. You're ruling the hearts and how. एक बार जोरदार तालियां इस क्विज रिकॉर्ड के लिए. We'll have a quick photo and as I said, ये सिर्फ click नहीं होने वाला है. It will be much more than that. So we have a surprise for all you wonderful people here. Start from here, all of you. Start from here. रुक जाओ जिब्रान भाई. Okay, we good? As I said, यहाँ पे सिर्फ क्लिक नहीं होगा, उससे कुछ ज्यादा होगा. मेघना जी, आ जाओ. मैंने सुना है आप रोहित की सबसे बड़ी फैन हो. ऐसा एक पूरी दुनिया बोल रही है. Give it up for her, ladies and gentlemen. Come on, Meghna, come round. ओहो, ये तो यार कमाल हो गया. यहाँ पे अरुण सर, मैंने सुना है आप भी यहाँ आइए. अरुण सर के लिए जोरदार तालियां हो जाए. पश्मीना के साथ ये यहाँ पे होने वाले हैं. Of course, Shreyas, the rock star. Come on in. आ जाओ. And the gorgeous lady, Janvi, where are you? Come in. Okay. So, Nipun sir, Ramesh sir, with your kind permission, हम यहाँ जो आपके ये पोस्टर्स है ना, इनको हमने डिकंस्ट्रक्ट कर दिया है. अब उनको दोबारा से बनवाने वाले इस जिगसॉ पजल के तौर पे इन सारे रॉक स्टार्स के द्वारा. So